कंपनी का नाम था यूके इंटरनेशनल सॉकर। ओके लाइक अगर कंपनी का नाम यूके तो अब यूएस क्यों जा रहे हो? मैंने दिखाया डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास सारे, ये हैं, आई एम लाइसेंस कोच, आई एम डूइंग इट। इट हैपेंस विद लॉट ऑफ भेज दिया पीपल 2 मिनट में, यार। मेरी शक्ल बन गई, मैं मतलब क्या करूँ? मी एज अ कोच आई हाँ कैन एक्ट एज एन एजेंट। हाँ ट्रू। अभी आई टेल अ क्लब मेरे पास प्लेयर है, या या टेक इट टू हिम, टेक दैट प्लेयर। या है कि अगर लड़कियां आप चाहते हैं खेले तो घर वाले तभी खेलने देंगे उन्हें जब घर वालों को लड़कियां ये बता पाए कि हाँ यार इसमें सस्टेनेंस और पैसा है। आई थिंक कर्नाटका हैज द बेस्ट लीग सिस्टम। Hello everyone, welcome to our next episode on Sports Charcha. And today we are here with Nitesh. He is a UFA B licensed coach. He has worked in with Barca Academy. He has worked in Spain also, and currently like he's a player himself. Very good footballer, and he works in an academy right now as a coach, and his aim is to be a bring a change in the sports ecosystem uh, with his work and with the facility that he's coming up with. So आज हम सारी बातें करेंगे फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़, ट्रेनिंग, व्हाट एन एथलीट शुड डू। एंड मैं पहली चीज़ नितेश आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने फुटबॉल ही क्यों पिक किया एज अ स्पोर्ट? क्या क्या उसके साथ क्या ऐसा रिलेशन रहा? व्हाई यू स्टार्टेड विद फुटबॉल? आई मीन वी आर फ्रॉम केवी बैकग्राउंड, मैं केवी से हूँ, केंद्रीय विद्यालय। एंड हमारे वहाँ स्पोर्ट्स इज लाइक टॉप प्रायोरिटी, लाइक सब कुछ। आई मीन वेट होता है पीटी पीरियड्स एंड जो भी होता है। ट्रू ट्रू, मैं भी केवी से हूँ। या सेम केवी एंड तो जयर। हल्का सा टाइम मिला, यू गो टू प्ले, बंक किया स्कूल, यू गो टू प्ले, सो ऑल दिस थिंग्स हैपन। तो आई यूज्ड टू प्ले मल्टीपल स्पोर्ट्स अंटिल 6th-7th क्लास। उसके बाद यू नो स्टार्ट वाचिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो वीडियोस देख रहे थे हम लोग, एंड यू नो लाइक दो स्किल्स एंड स्टफ। तो फिर सोचा आज स्किल्स ग्राउंड में ट्राई करते हैं, एंड इट इज जस्ट क्यूरियोसिटी, यू नो क्या है, कैसे सीखना है स्किल। यूज्ड टू वर्क हार्ड एट होम अलोन, नो वन इज वाचिंग। सो आप क्योंकि ट्यूटोरियल देख रहे हो और आप ग्राउंड में जाके ट्यूटोरियल प्रैक्टिस सब कर नहीं था तब, डायरेक्ट अच्छा मैच वीडियो, मैच में जो स्किल हो रही है हम लोग खुद वी आर ट्राइंग टू लर्न इट एट होम। ओके एंड दैट इज हाउ योर लेवल यूज्ड टू इंक्रीज इन स्कूल की, यू नो हीरो प्लेयर है, स्किलफुल है वो सब। हाँ हाँ तो वहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा बनने लगा। एंड देन 10th में आई गॉट अ चांस टू प्ले इन द कोलंबिया एशिया टूर्नामेंट जो होता है हमारे केवी का। ओके एंड आई डिडंट गो, क्योंकि हमारा एक्सकर्शन और द टूर्नामेंट था सेम टाइम पे था। सो आई चोज एक्सकर्शन ओवर द फुटबॉल टूर्नामेंट। द फर्स्ट टाइम आई चोज समथिंग ओवर फुटबॉल, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम। तो आई हैड लॉट ऑफ रिग्रेट्स टू नॉट प्ले देयर, क्योंकि तब वो था ना कि सब दोस्त लोग जा रहे हैं वो है, एंड इट वाज फॉलिंग इन बिटवीन टूर्नामेंट कि अगर हम जीतते रहते तो फिर यू नो चांस नहीं मिलता जाने का। तो देन आई मिस्ड इट, एंड सिंस देन आई नेवर मिस्ड अ टूर्नामेंट। एंड तब से इंटरेस्ट और बढ़ गया कि फुटबॉल में ही कुछ करना है अभी। एंड देन 11th में रीजनल्स जीते, नेशनल्स, एंड इट ओके केप्ट ऑन फॉलोइंग लाइक दैट। एंड देन तब से मोटिवेशन आ गई, क्योंकि वी आर फॉलोइंग रोनाल्डो, एंड तब इट वाज एन हाइप। तो it was pretty fun. So I went into football completely उस time पे, and there were a lot of cheers around. Fun as a sport, हम लोग शाम को वही खेलते थे जो भी हो, और with locally जो local लोग रहते हैं हमारे पास उनके साथ, and so it was pretty good. So तब से football is like top priority for me. सो फुटबॉल आपने प्रोफेशनल सबके लाइफ में आता है। लाइक स्कूल टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं मजे के लिए, बट ये कब आया फील कि यार मेरे को कैरियर बनाना है या इस इंडस्ट्री के अराउंड काम करना है? ये कब आपके अंदर आया? तब जोश था कि यू नो फुटबॉलर बनेंगे, क्योंकि वो लाइफस्टाइल ऐसी थी, एंड यू नो बस खेलना है, कुछ नहीं, उठना है, खेलना है, उठना है, खेलना है। तो मैंने कॉलेज ऐसा चूज किया जिसमें फुटबॉल, बेसिकली स्पोर्ट्स को लोग यू नो प्रायोरिटी देते थे। तो आई अच्छा वेंट टू न्यू हॉराइजन कॉलेज, ओके एंड वहाँ पे आई हैड लॉट ऑफ सीनियर्स फ्रॉम केवी, दे लाइक यू नो अटेंडेंस फ्री मिलती है, मार्क्स फ्री मिलते हैं। तो वाह इट वाज अ सेपरेट मोटिवेशन की वाह यू नो स्पोर्ट्स खेलते हैं। हाँ हाँ एंड अपने केवी के लौंडे बहुत थे वहाँ, भैया लोग थे, तो इट्स अ गुड कनेक्शन ऑलवेज की वो रहता है। तो वी गॉट टू नो, एंड आई जॉइंड द कॉलेज थ्रू सीटी ओके बेसिकली। ओके एंड फिर वहाँ पे आई वेंट फॉर ट्रायल्स, सुबह ट्रेनिंग हो रही थी, एंड आई सॉ पीपल प्लेइंग, आई लाइक आई कुड फिट इन, आई मीन तब आई हैड अ गुड लेवल ऑफ प्लेइंग, गुड फिटनेस। एंड उस टाइम पे आई चूज की ठीक है खेलते हैं, इंजीनियरिंग करते साथ साथ, पेरेंट्स खुश है, मैं भी खुश हूँ, एंड लेट्स सी 4 साल में वेयर डू वी रीच। ओके क्योंकि एंड तब 18 साल थे, तो इट डिडंट लुक लाइक इट वाज लेट, क्योंकि कुछ आइडिया था नहीं बेसिकली। ओके
And then I met coaches there, and they told me about super division clubs, C division clubs, Okay. कि state divisions भी होते हैं, so you can try it there. That's the road to professional football. Uh-huh. So we thought let's go all out. तो सुबह जल्दी उठना 4 साढ़े 4 बजे, and then leave at 5 o'clock, क्योंकि कॉलेज 34 किलोमीटर दूर था. हम लोग एयरफोर्स कैंपस में रहते थे वहाँ पे जालाली साइड. एंड तब से इट वाज लाइक मोटिवेशन फॉर मी कि कुछ करना है. And it just kept on going, kept on playing tournaments, university tournaments, ये सब. We kept on improving, made contacts, played a lot of private tournaments. तो पता चलता है कि environment is ऐसे, ये सब है, it's good, we can go and play around. तो that's when I totally thought कि फुटबॉल में कुछ कर सकते हैं, and देखते हैं आफ्टर कॉलेज क्या होता है. मुझे कुछ क्लियर आइडिया था नहीं उसका. तो आई वाज लाइक, सी डिवीजन के ट्रायल्स आ रहे थे. देयर इज अ टीम नेम C2FC. तो they hosted the trials, and then me and 4 of my seniors from college went for the trials. तो सिलेक्शन हो गया उनका, मतलब 2-3 राउंड थे, एंड देन उसमें फिटनेस एंड एवरीथिंग नेचुरली आई हैड. तो फिटनेस टेक्निकल, एंड देन वी गॉट सेलेक्टेड. तो कॉल आया कि यू आर इनटू द स्क्वाड. देन वी आर वेरी हैप्पी. एंड आज तो सी डिवीजन की कोई इज्जत नहीं है. Okay. तो Yeah. उस टाइम पे ऐसा था कि सी डिवीजन हो गया, पहला क्लब लेवल पे खेल रहे हैं, नाइक की किट्स मिल रही है हमें. Wow. एंड वी शुड ट्रेन इन कंतीरवा स्टेडियम. सुबह फिटनेस होती है, और शाम को किसी मड ग्राउंड में वी हैड अ टीम ट्रेनिंग किसी स्कूल में फार ऑफ यलंका साइड पे था. तो उस टाइम में पहला क्लब साइन किया मैंने. देन आई अंडरस्टूड कि पाथवे ऐसा है, एंड दैट्स व्हेन आई सॉ द स्टेडियम फॉर द फर्स्ट टाइम, बैंगलोर फुटबॉल स्टेडियम. तो टर्फ देखी पहली बार, Wow. लाइफ में पहली बार टर्फ देखी थी उस टाइम मैंने, इतनी बड़ी वाली. मतलब छोटे पे खेले हम लोग, बट बड़ी टर्फ पहली बार देखी स्टेडियम. एंड देन माय कॉलेज सीनियर्स टोल्ड कि रोटरी टूर्नामेंट होता है यहाँ पर, इट्स इन दिसंबर. तब होते हैं हमारे एक्सटर्नल एग्जाम्स. तो हम लोग एग्जाम लिखेंगे, फिर खेलने भी आएंगे. आई यू ओके विद इट? लाइक हमारा क्या है, मतलब वर्क्स फॉर मी. तो दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि ये सब लीग्स भी होती हैं. देन बाय देन आई रियलाइज कि हम लोग, मैं सी खेला 2 साल फिर विद देम, एंड आई वाज ऑलरेडी 20-21. एंड देन आई रियलाइज कि लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स आर देयर. तो आई अंडरस्टूड कि इस एज पे भी फुटबॉल क्रैक करना मुश्किल है. उस टाइम पे इतने लीग्स नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, अंडर 21 टूर्नामेंट्स नहीं थे, U23 टूर्नामेंट्स नहीं थे. आजकल हैं, U21 है, U19 है, U17, U15. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि एक लास्ट ट्राई मारते हैं कि इफ आई कैन डू इट. एंड देन आई रियलाइज कि मुश्किल है. देन माय कोच टोल्ड कि डू योर डी लाइसेंस कोचिंग का. इट माइट बेनिफिट यू माइट बी इन स्पोर्ट, एंड गिव इट बैक टू स्पोर्ट्स इन अ वे. तो आई थॉट कि लाइसेंस कर लेते हैं, साथ साथ खेलते रहेंगे, कोचिंग भी करते रहेंगे, यू कैन हैव फाइनेंशियल बैकिंग एज वेल. तो वो प्लान था. एंड मेरे को लाइसेंस का बताओ कि कैसा है लाइसेंस. ये फीफा का अलग होता है, एंड लाइक हाउ डज दिस गो? तो बेसिकली यूएफए है अपना अलग से, इधर अपना एएफसी है एशियन वाला, उधर यूएफए यूरोपियन वाला अपना. तो अभी क्या होता है, हर कंट्री का पहले उनका लाइसेंस होता है. जैसे इंडिया का होता है AIFFD लाइसेंस. तो AIFF इज नॉट विद AFC. वो कंट्री का पहला है कि आप फिल्टर कर रहे हो, मतलब आपको बेसिक कोचिंग सिखा रहे हो वो लोग. तो आपका AIFF हो गया D, देन AFCC, AFCB, AFCA एंड AFC Pro. ये सिस्टम है. यूएफए का किया मैंने, स्कॉटलैंड से किया मैंने लाइसेंस अपना. तो वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड, जब मैं कल्ट फिट में काम कर रहा था, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, कल्ट फिट. एंड व्हाट यू आर ट्रेनिंग देयर? as a football coach and a sports conditioning coach. Okay. So they had these two, जहाँ पे fitness कल्ट through स्पोर्ट्स में आप हाँ कर रहे थे? fitness through football था, and sports conditioning, basic agility, speed and all these things combined with a fun atmosphere. My first job था, I was earning more than an engineer that time, right after my college, whereas my friends in mechanical were struggling to get a job. So that's when I realized कि sports में बहुत growth है. My parents were happy in a way कि something is making out of sports. मैं तब 30-35 पे कर रहे थे लोग for a fresher. मैंने डी लाइसेंस भी नहीं किया था. मैंने डी उसके बाद किया, आई मीन कल्ट के मिडवे में डी किया मैंने. एंड दैट इज व्हेन आई मेट अ फ्रेंड हु टोल्ड मी कि वो बाहर जा रहा है लाइसेंस करने. आई अंडरस्टूड क्या है कि बाहर क्या है. ही सेड कि स्कॉटलैंड जा रहा हूँ, यू कैन डू द यूएफए लाइसेंस, हायर वेटेज है, वर्ल्ड वाइड एक्सेस मिल जाता है, पीपल नो. तो मैंने फिर वहाँ पे स्कॉटलैंड गया, वहाँ पे मैंने अपना FA लेवल 1 किया. तो वो क्या है, अगेन AIFFD की तरह है, स्कॉटिश FA लेवल 1 है वो. तो स्कॉटलैंड का मतलब ऐसे लाइसेंस है स्कॉटिश FA का, टू फिल्टर आउट एंड टू टीच यू. एंड उसका क्या है ना, जैसे डी में फेल करते हैं आपको, वहाँ फेल नहीं करते. FA लेवल 1 में सबको दे देते हैं लाइसेंस, क्योंकि दे वांट यू टू स्टार्ट योर जर्नी. आप बच्चों के साथ काम करो, सीखो. एंड देन आई डिड दैट, एंड देन डिड माई C लाइसेंस अलॉन्ग विद इट. हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल लोगों के लिए इट्स एन इंटेंसिव कोर्स. आपको 10 दिन में पूरा कर जाते हैं. 5 दिन में आपका हो गया FA लेवल 1, 5 दिन C लाइसेंस. एंड आई पेड अराउंड 45,000 फॉर द लाइसेंस, FA लेवल 1 एंड C इंक्लूडेड. फिर फ्लाइट का अलग 50,000 बैठा था मेरा, एंड स्टे का 20,000, खाने का 20,000, तो 1.5 लाख में हो गया था ऑलमोस्ट लाइसेंस. एंड उसके बाद ट्राई टू अप्लाई फॉर जॉब्स देयर. पता नहीं था ना क्या है. Okay. तो
कुछ मिला नहीं क्योंकि एवरीवन हैज सी लाइसेंस देयर, Okay, yeah, बहुत कॉमन है वहाँ के लिए. yeah, मैं yeah. थॉट कि एक नॉच हायर जाना पड़ेगा. देन बैंगलोर में आई हैड अ गुड हाइप की यूएफए सी हो गया है. Uh-huh, And I had offer from Barca Academy and all that. So uh-huh, I worked for 3-4 months. Then I got an offer from USA also. uh-huh. Again kids के साथ ही था, but then like UFA license mandatory there. तो True, true. अच्छा था, it was a 9 months का internship kind of thing. Mm-hmm, J visa पे मिल रहा था. mm-hmm. But then they were gonna pay good. I mean free stay है, free. They give you a car there to roam around for work and all that. Okay. Petrol, gas prices Yeah, सब कुछ there's a देते हैं. lot of reimbursements and करेक्ट incentives. करेक्ट Yeah. हाँ, तो घर देते हैं रहने के लिए. एंड देन ऑल दिस एंड they'll pay you good like 16 to 20 dollars per session, एक घंटे का. Mm-hmm. I got it in Connecticut, but then my visa got rejected in Delhi because some old consulate was there and I don't think क्या हुआ क्या समझे वो लोग. They were like आप, कंपनी का नाम था यूके इंटरनेशनल सॉकर. Okay, लाइक अगर कंपनी का नाम यूके तो अब यूएस क्यों जा रहे हो? okay. Yeah, सिली yeah, क्वेश्चन true. था, बट कंपनी इज रजिस्टर्ड इन कैलिफोर्निया. मैंने दिखाया डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास सारे, ये है, आई एम लाइसेंस कोच, आई एम डूइंग इट. It happens with a lot of भेज दिया people. 2 मिनट में, Yeah. मेरी शक्ल बन गई. मैं मतलब क्या करूँ? Uh-huh. कुछ नहीं है, मतलब वो बोल रहे सर कीप मूविंग ऑन. अब बोल रहे कि तुम उधर से कॉल है मेरे को यूएस से कि वापस अप्लाई करो. Uh, 3 महीने में अब क्या वापस 30,000 पे करने पड़ते हैं. उसमें आपको कुछ कुछ सेफ गार्डिंग कुछ कुछ चाहिए होता है. तो वो अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है. एक 12,000 है, एक 18,000 है, mm-hmm. तो 30,000 लग जाते हैं उसमें. तो आई सेड कि आई विल सी, बट फिर मैं नहीं किया, नहीं मैंने. तो दैट वाज द प्लान. तो फिर मैंने यूएफए सी लाइसेंस किया एंड मैंने बी करने वाला था अगले साल, फिर कोविड आ गया. Okay. तो आई फिनिश माई बी लास्ट ईयर ड्यू टू दैट. तो लाइसेंस का ऐसे रहता है, यूएफए सी, यूएफए बी, यूएफए ए एंड यूएफए प्रो. तो Okay. यूएफए प्रो तो 8 लाख का होता है. Okay. Yeah. तो द प्राइसेस But गो हाई. I feel like you get access to more big academies and all. आई थिंक द अप्रोच आल्सो इज डिफरेंट Uh-huh. in UFA licenses, whereas in AFC it's a little more lower. Okay. क्योंकि what you're doing in UFC they cover in FA level 1, Okay. so it's one step higher. Plus if I have a UFA B license, I can get my AFC B license without doing the license. Wow. So to be on the Indian portal you need to have AFC B license. So they give you something as a rec certificate. Okay. They recognize the certificate with a certificate given by AFC. So once you submit a UFA license, they'll give you AFC B online. You can upload that as a supporting document. Okay. That's when you go to the coaches portal. So, but I can't get a UFA B if I have my AFCB. It's the other way around only. If you have a UFA B, you'll get an AFCB rec certificate because the value is higher and the weightage is higher. Okay. So I'll do my UFA next year. That's the plan. So getting into coaching was like you got somewhere in the journey you got inspired by कि मेरे को जो लड़के young youth आ रहा है, you felt like you are a good teacher, you can be a good teacher, then becoming a great player, and you found your purpose more into teaching. हाँ, I mean I felt कि मैं तो कर नहीं पाया. Let's help out other Yeah. people in a way क्योंकि I am experiencing things True. which they don't have to. Yeah. So we can help them out and It's a very good thought actually. हाँ, तो मतलब help them out so they don't suffer and they don't miss out on these things. Mhm. And I also tell them to do the licenses parallelly क्योंकि backup रहना चाहिए. Believe me, it's much required Yeah. in a way क्योंकि playing में कुछ injury हो गया, career खत्म. Yeah. At least if you have license, you know how to coach, you can work with this thing Yeah. and sustain. That is the whole point, sustaining. Yeah, many people actually जो भी है जिनके पास बैकिंग नहीं होती, फैमिली बैकिंग नहीं होती, ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं होता, आई हैव सीन कि वो एकेडमीज में काम कर रहे हैं. Correct. वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी सेटअप ये टू फॉर द सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस अपने कैरियर में. और सर्वाइवल सस्टेनेंस से ऊपर मेरे को लगता है कि एक एथलीट एक कोच प्रेफरेंस जब तक समझता है ना कि कोच क्यों बोल रहा है और किस वजह से बोल रहा है, तब तक बहुत डिले हो जाता है. एंड डूइंग पैरेलली आप लाइसेंसिंग करते करते एक्चुअली वो परसेप्शन सोच पाते हैं. करेक्ट. एंड ऑल्सो अगर आपने लाइसेंस जब मैंने किया था, आई इम्प्रूव एज अ प्लेयर टू बी ऑनेस्ट. जब मैं बाहर से देख रहा हूँ मुझे समझ आया कि क्या गलतियां होती है. सो व्हेन आई प्ले आई डोंट रिपीट इट. सिमिलरली इफ प्लेयर्स हैव डन द लाइसेंस, व्हेन दे नो हाउ टू टीच कि मैं इसको ये क्यों सिखा रहा हूँ, व्हाई शुड यू नॉट डू दिस, व्हाई शुड यू डू दिस. सो व्हेन यू स्टेप ऑन द पिच यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दोस थिंग्स, so you end up playing better. And that's how my game improved after I left college. Yeah. I can feel it. My technique became better. I could understand things. I could analyze things better. So in a way, I improved as a player. But then it was too late in a way. But then I still play. Play Super Division or A Division. Based on some fitness I have, some technicality I have.
but then you improve. So I tell my players to अपना license भी करो, सीखो, and you can also start working parallelly. आप पूरा दिन क्या करते हो? 1.5 घंटा कोच आपने सेशन हो गया आपका खेलने का, बाकी रेस्ट हो गया, मान लो सुबह जिम हो गया 1 घंटा, बाकी टाइम पे एटलीस्ट इवनिंग्स में यू कैन गो एंड टीच सम किड्स, मेक सम मनी फॉर योरसेल्फ, you'll also teach, you'll also end up learning. So eventually you'll grow as a player, as a human being. आई फील लाइक कि मैंने भी 2016 के आसपास कॉलेज स्टार्ट किया अपना, एंड हमने लाइक मैं अंडर 14 गुवाहाटी से खेलता था सर पे। तो हम लोग ने अपने साथ में देखा कि हमारे सामने आईएसएल स्टार्ट हुआ, हमारे हाँ सामने एक्चुअली वो सारी चीज़ें बनने लगी, वो चीज़ें ओपन अप होने लगी जब एक्चुअली मैंने होप छोड़ दिए थे। और अभी जैसे हम देखते हैं कि देयर आर मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यू ओपन अप, की एकेडमीज बहुत ऑर्गेनाइज हो गई, लीग्स बहुत ऑर्गेनाइज हो गए। जो हमारे टाइम पे नेटवर्किंग गैप था फेडरेशंस, एकेडमीज, लीग्स, डिस्ट्रिक्ट बॉडी, स्टेट बॉडी के बीच में, वो अब धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है। करेक्ट। लाइसेंसेस कोचिंग के अलावा एक जो चीज अभी यहाँ पे है, टेल मी मोर अबाउट एजेंट्स एंड प्लेयर स्काउटिंग। अभी अब ये कैसे चल रहा है? लाइक आई नो अबाउट क्रिकेट कि वो है काफी ऑर्गेनाइज है, कि देयर आर प्लेटफॉर्म जो स्काउट कर रहे हैं, लीग्स हैं जो प्लेयर्स को पिक कर रही हैं, और स्टेट लेवल लीग्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीग्स आर डूइंग वेरी गुड इन क्रिकेट, की वहां पे बंदा सस्टेन और सर्वाइव कर लेगा। बट अभी अपना फुटबॉल में स्काउटिंग कैसे चल रहा है, टैलेंट स्काउटिंग, एजेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं to get people in leagues, clubs and all, how that thing is going? So I think agents का रोल अभी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है इंडिया में देखा जाए तो. Any guesses of the number कि कितने agents होंगे? I mean officially there will be 10 to 15 I guess. Okay. Agencies ऐसे Okay. officially. Unofficial बहुत है. Me as a coach, I can act as an agent. True. अभी I'll tell a club मेरे पास player है, take it to him, take that player and इतना पे करो उसको because this is value, and उसमें I'll take a cut. ऐसे 15 is a very good number. बास्केटबॉल में अराउंड 2 साल पहले तक मैंने चेक किया था, एक एजेंट था बस, पूरी इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन के लिए एक एजेंट था. Yeah, it's comparatively. अभी काफी एजेंसीज अभी ओपन हो गई, इन्वेंटिव स्पोर्ट्स आई थिंक एंड गैलेरिया स्पोर्ट्स है. देयर आर 8-9 names I know, and so these are proper AIFA licensed agents. Not sure about that. Okay, so ये होना एक्चुअल में I think वो होने से एक्स्ट्रा वैल्यू है, you can go worldwide, but India में I think you don't need it as of such. In a way you need it, but then people are not needing it. I've seen people like जो ISL clubs हैं उनमें agents हैं for scouting and all. आई लीग में एजेंट्स हैं, है ना, डिवीजन फुटबॉल्स में, सुपर डिवीजन में भी चल रहा है एजेंसी, मतलब यूनिट एजेंट्स अभी सबको ऑलमोस्ट पे करते हैं. बट आर दे लाइसेंस थ्रू AIFF? आई डोंट नो अबाउट दैट. Not sure internally कि there might be one person who's licensed. Agency का ऐसा नहीं है. You can just open a sports management company and manage players. I have my own sports management company. एक proprietorship register की, and then I can just send players to club. I mean, I'll just give a player to super division team कि यार pay him 35 lakhs is what you're demanding. He's a good player. The player pays me 35,000 per month pay करो for whatever the season duration is, 5 months, 6 months. In that the player gives me 10%. 3.5k आ रहा है. So I'm making almost 20-25k in 6 months. Similarly, if I have 10 players I've given, 2.5 lakh बन गया ना मेरा 6 महीने में. तो unofficially also they're working, officially also they're working. It's about the players whom they trust. It's mainly the coaches under whom they've trained, who have multiple players they've trained under them, and they know he has potential, so I can put him here, put him there. So last year from my C division team, I was coaching a C division team. I have 8 of my players who have signed higher division this year. Some have signed A, some have signed super. Some are on non-paid, some are on paid. But for me, the money is secondary. But my players have to. The whole point of me training players is to develop them in a year, so they are capable to train with super division team or give trials and crack it. That is my goal as a coach. कि मेरे पास कोई प्लेयर आ रहा है, उसको मैं 1 साल में इतना डेवलप करूँ, so he's eligible to at least join the team, or at that level कि they will take him in to see कि इसमें potential है and we can develop him. So that is how my goals are. But then you can always sell players to a club. अभी स्काउटिंग प्रोसेस जो है हमारी, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, और इसके अराउंड
मैं अभी तक स्काउटिंग वाला पार्ट, टैलेंट स्काउटिंग और एजेंट्स रोल इन द करंट फुटबॉल इन इंडिया, हाँ, मैं अभी तक वो समझ नहीं पाया हूँ. एजेंट्स का तो यही सिंपल है, देर मूविंग प्लेयर्स हियर एंड देयर, या सिंपल एज दैट, ज्यादा बड़ा कुछ कर नहीं रहे हैं. स्काउटिंग इज नॉट एट दैट एलीट या लेवल. या There are few things like IKFA, India Khelo Football. They या have some scouts under them. आपने देखा होगा. वी हैव वर्क विद देम. या Yeah, so they are scouting under 13, under 15, and they या take them to Europe also. या These things are या happening. They give it to different academies and clubs also. So that is one thing I'm seeing. उसके अलावा I've not seen any scouting agencies as such. ओके. हम भी जब स्काउट करते हैं, we do it personally. ट्रू. आप स्काउटिंग लाइसेंस कर सकते हो. या आई थिंक PSFA से, ओके. प्रोफेशनल स्काउटिंग फुटबॉल कुछ ऐसा एसोसिएशन है. सो लेट्स वर्क अराउंड इट कि हमारे पास बीइंग एन एथलीट AIFF में कितने अलग रोल्स हैं जिसमें एक बंदा अपना फेडरेशन के साथ रह के प्रोफेशन क्रिएट कर सकता है. नॉट इवन फेडरेशन, अगर ओवरऑल देखो, फेडरेशन तो थोड़ा हो जाता है, हम लोग सीनियर लोग को लेते हैं हु एक्सपीरियंस्ड. अगर आप कोई एथलीट है 25-26, आप या तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर लो, so there are a lot of academies looking for a manager who can run things for them, all this player Yeah, registrations, this that that's one. Yeah. player, क्योंकि अगर आप हो, they look up to you. You can be a coach, strength conditioning coach है, physio, ये हो गया. Then you can be a scout for the club, कि you are going elsewhere scout. You can be someone who develops the brand for the club, getting this. So there are multiple avenues जिसमें आपने किया है, Refs. referees, yes, correct. Yeah. Referees तो अभी a lot of them are doing. Yeah. जितने referee है KSFA में, most of them I've seen Yeah. morning में they do their IT job, Yeah. whatever work they're doing. Evening में refereeing करने आ जाते हैं, और Sundays को they are refereeing on the matches. Then there are coaches. Then there are coaches. Coaches are obviously there. So you have all these options available. And then agents also, उसमें क्या hard work थोड़ा ज़्यादा. You need to have contacts. They need to believe you. Club needs to believe you कि आप quality players लाते हो, तो उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग जाता है. उसमें you have to make a name. But I think overall there are so many avenues you can work with. Let's come on to the business around football that is happening. You've told that you are also coming up with a great setup. Yes, I plan to put a new setup within a school. Gym, swimming pool, dormitory for the players to stay, and it's a whole residential setup. Whole residential setup is what we are planning. Schooling. Huh? With schooling. With schooling, correct. Wow. So that is what we are planning. That's an amazing initiative. Yeah. So ideally we want to grow the players with education as the backing to start with. Half of the players at 16-17 think कि नहीं बस खेलना है मुझे, पढ़ाई जाए, आगे काम आती है. You believe it or not, you need to have education, at least some sort of, at least 12th pass or कुछ. It'll help you somewhere in future. कुछ हो जाता है, by any chance, so it'll help you out. इसके अलावा like business around sports पे like आपने अपने setup के बारे में मेरे को बताया कि you guys are thinking of executing more and more initiative in that. तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो ideally we want the place to be able to train for a longer duration. अभी क्या है ना, if you rent out a ground, lot of restrictions are there. Ground वाले को पैसा बनाना है, तो he'll ideally give it to multiple academies. You can't get peak slots, becomes tough for players to travel. So we want to take out all these problems away. कि जिस टाइम पे players can come, अभी 6 PM 6:30 PM टाइम का अगर आपको स्लॉट मिल रहा है, यहाँ मिलना मुश्किल है प्राइवेट ग्राउंड्स, बिकॉज दे रनिंग देयर ओन सेटअप. ट्रू. तो इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड ऑल्सो, आपको टाइम नहीं मिलता. ट्रू. उतना वो जो पीक स्लॉट नहीं मिल पाता. ट्रू. क्योंकि अगर आपको 6:30 स्लॉट मिल रहा है, 6 PM स्लॉट मिल रहा है, बच्चा आता है स्कूल से 4 PM, रेस्ट, कैन डू हिज होमवर्क, कम प्ले, गो होम, eat dinner, sleep early. Parents are happy, he's having a systematic life, not wasting too much time. So in a way that's beneficial. So getting peak slots is something we were looking at. अपनी facility है, we can run session at the time where they're comfortable. पहली बात, they can get more sessions. पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही, पेरेंट्स आर कंफर्टेबल, ट्रैवलिंग इज ईजी. सेटअप का वेन्यू ऐसा है कि you don't have to travel so far, मतलब आसपास है, स्कूल है, we can arrange buses for the players to go back. We can do all these things. तो वो बेनिफिट होगा. तो that is what we are planning, and they can come and train personally whenever they want. They don't have to pay extra. आपको अपने फ्री किक्स पे काम करना है, रनिंग पे काम करना है, एक्स्ट्रा जिम वर्क करना है, आ जाओ. It's all yours. Because once you're into the system, now obviously they'll have to pay because system works both way. We are investing crores for players to develop. They can invest pennies too.
Yeah, It's an investment for help you themselves. sustain. Yeah, help you sustain, and it's an investment for themselves at the करेक्ट, same एंड time. इट्स द सेम थिंग, आप स्कूल में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके Yeah, पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली आपके लिए, expecting you'll get a job and you'll start making returns. yeah, yeah, true. So it's same way here, you're learning Yeah, a yeah. sport, you might crack a deal at a higher level, or you'll grow at least in a field. आई फील लाइक कि फुटबॉल काफ़ी ऑर्गेनाइज और सस्टेनेबल हो गया है. Hmm. सब प्लेयर्स को इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है आज के टाइम पे. लेकिन आज से अगर आप, हमने इतनी ड्रास्टिकली इतना अच्छा मनी पंप इन हुआ है इंडियन फुटबॉल में. और प्लेयर्स को अभी आई थिंक इट्स बीन 8-9 years की एकदम ग्रोथ देखने के लिए मिला है ऑन द पे स्केल ऑल्सो, on their survival also. And it's good ki government is also focusing more and more, and corporates and brands are coming in to back football in India. And हाँ यार, हमें potential है. So हम women's football के बारे में बात कर रहे थे. And like it's good कि मतलब अगर हम वुमेन्स फुटबॉल को और वुमेन्स फुटबॉल पार्टिसिपेशन इन इंडिया अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उससे उसके लिए एक मोटिवेशन तो पैसा हर एक स्पोर्ट में है ही. कि अगर लड़कियां आप चाहते हैं खेले, तो घर वाले तभी खेलने देंगे उन्हें जब घर वालों को लड़कियां ये बता पाए कि हाँ यार, इसमें सस्टेनेंस और पैसा है, Hmm. मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कैरियर बना सकती हूँ. और आई हैव many इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम फ्रेंड्स जो बढ़िया खेल रही हैं अभी, अच्छा कर रही हैं, फैमिली टेक केयर भी कर पा रही हैं. बट कहीं ना कहीं मेरे को ये तो है हर एक स्पोर्ट में कि लड़कियों को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया जाता है. अगर कहीं हम अपनी नेशनल टीम वुमेन्स की देखें, नेशनल टीम मेंस की देखें, तो देयर इज अ डिफरेंस. सो एनी कमेंट्स ऑन दैट? तो women's football में at higher level the money is insane, as I told. 2 महीने का 1.5 लाख, like anyone who's played national level या national camp में थे, agents are charging. Basically agents are controlling the women's football. ओके. यहाँ भेज दिया प्लेयर को, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही है, यहाँ से आएगी तो यहाँ जाएगी, यहाँ से आएगी यहाँ जाएगी. तो ये ओके. चल रहा है, मतलब ऐसा ही मैं लाइक ये इधर डाल दिया प्लेयर इस क्लब में, फिर यहाँ से इस क्लब में, तो क्लब हैज़ नो चॉइस इन दैट. एंड आई सीन लॉट ऑफ, मैं इंडियन वुमेन्स लीग में आई वाज कोचिंग अ टीम कॉल्ड सेल्टिक क्वीन, जब इंडियन वुमेन्स लीग हुई थी, एंड उसमें आई सी देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु कम की एज अ क्लब आई एम गिविंग यू सम प्लेयर्स, थोड़ा गेम टाइम दे देना. ये भी चल रहा है अंदर, एंड आई डिडंट लाइक इट वेरी मच. ओनर्स आर वरीड, दे आर कोचिंग फ्रॉम द साइडलाइंस की लॉट ऑफ जगह की इसको खिलाओ उसको खिलाओ, दिस थिंग्स हैपन. तो कोचेस के इन अ वे देयर इज नो वैल्यू उस टाइम पे, एंड दे गेट द एजेंट आल्सो इज गेटिंग प्लेयर्स. इफ मी एज एन एजेंट आई एम गेटिंग 5 प्लेयर्स, आई विल बी देयर इन द टीम, क्योंकि मेरी बात सुनेंगे ज़्यादा. प्लस देयर इज नो सिस्टमैटिक वे जहाँ पे यू हैव विमेन प्लेयर्स फॉर अ ईयर विद द सेम क्लब who are training for past 6-7 months and gonna play the league. नहीं, मैच के 1 महीने पहले आते हैं, लीग के स्टार्ट ट्रेनिंग, कितना पे करना है, क्योंकि इन अ वे पैसा खर्च करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा. इफ यू हैव देम फॉर 1 year, रहने का दो, ट्रेनिंग का, ग्राउंड का दो, खाने का दो, नो वन वांट्स टू डू इट. The club I'm working in, Technico, me and Vivek is the founder of the club. We had a discussion with a lot of agents ki we want players for a long duration, Okay. at least for the year, full year. Full Okay. year के लिए play चाहिए, we will develop them. They'll play league with us. We will also send them to play higher divisions also. So आप एक साल में 3 division खेल सकते हो, 3 different states से. That's the rule. So you play in Karnataka, you can play in Rajasthan, Mumbai ऐसे. So we'll send the women's to play IWL, they play and come back to us. They're in national camp, they go to national camp, come back to us. How it works in European football. We want to create that system. Second, no one's focusing on education of women's. Women's player है, बस इस क्लब में खेले, इधर खेले, इधर खेल लिया. एजेंट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको पैसे आ रहे हैं. बट नो वन थिंकिंग कि if this girl gets injured someday or she doesn't have a career in it, what's her backing? So here we thought ki Vivek was like, we'll give them education also, get them to teach things which will help them in their life after football. 24 25 they can decide ki okay, I can do this also, I can do this also. Teach them coaching, sports management, all these things. So not many clubs are doing it. Yeah. So this is something which is lacking behind. So एजुकेशनल सेंस ही नहीं बन जाते ना फिर वुमेन प्लेयर्स को. दे आर जस्ट गोइंग वेयर द एजेंट्स आर सेंडिंग देम खेलने. True. Yeah. नो थॉट ऑफ देमसेल्व्स कि मतलब मुझे क्या करना है. So your advice for them is कि they should be more aware about things. Yes, about the system. Decision making खुद होनी चाहिए. आप Correct. पहले सारी चीज ऊपर से देखो, टॉप व्यू, आप समझो कि चीजें कैसे फंक्शन कर रही हैं.
and then you ideally make decision for yourself. Right. And also pursue education. I Yeah, mean, demand these things also, and true. it's an advice for the clubs also. Ki, start having training for the year. They Yeah, deserve a little more. yeah. Women's ranking is pretty good Hmm. all around the world. I think 56, 54 पे कुछ है, I'm not sure. But this is what they have to. Clubs have to take responsibility. Hmm. ऐसा नहीं आई खेली 1.5 महीना 2 महीना then go to different club. Hmm. So there should be a system ना. Even for men's you want to have a system. Hmm. They should get paid for the whole year क्योंकि they're with you. They Hmm. make extra when they go to play a different higher club. They Hmm. go to play national team. That's how other clubs work, right? Yeah, Abroad में. yeah, You are with my club. If you're a Man City player, you're with me for the whole season. 5 साल का contract है. बीच में national duty आई, you go and come back. yeah, वहाँ से अलग payment आए, that's for you. yeah, But then we are developing you, we are investing in you. yeah, Also, they're teaching them, even in European clubs, they have sessions, they have classes. They're getting education, learn to talk. English हो गया, language learning हो गया, या any subject they want to read. So all these things have to happen here. It's just not about putting in money. तुम खेले, I won, my pride is up, हो गया खत्म. So it doesn't work that way, na? hmm. You have to start doing it for men's also. Club hopping is the worst thing. Club hopping. Do you have any idea of club hopping? Yeah, like यहाँ से कुछ मिल रहा है, यहाँ से कुछ ज्यादा मिल रहा है, इधर चले गए, इधर चले गए, करेक्ट. थाली हर साल आप थाली क्लब के चेंज कर रहे बैगन हो. की तरह घूम रहे हाँ. हो आप कहीं पे. सो एक्चुअली में मेरे को तो लगता है कि आप किसी जैसे कंपनी में हो, आपको ये देखना चाहिए कि मैं ग्रो करूंगा, कंपनी ग्रो करेगी. करेक्ट. उसी टाइप से आप ग्रो करोगे, क्लब ग्रो करेगा, क्लब ग्रो करेगा, आप ग्रो करोगे. अभी कुछ लोग आते हैं. आई टेल यू फैक्ट. प्लेयर्स आ रहे हैं सर स्कॉलरशिप. 16-17 साल के, मतलब अपने गांव में हीरो होंगे. हाँ, हाँ. सर स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं मिलती, दूसरे क्लब में जाते सर स्कॉलरशिप. हम्म. अभी आप ये देखो, आप जिस क्लब में खेल रहे थे पहले, आप वहाँ पे कर रहे हो. आप जब वहां पर बेस्ट प्लेयर नहीं हो, आपको कोई और क्लब स्कॉलरशिप क्यों देगा? ट्रू. अंडरस्टैंड, यू टू इन्वेस्ट टू ग्रो. वंस यू हैव दैट वर्थ, दे विल ऑटोमेटिकली टेक यू इन. या तो आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आई नो देयर आपको आर प्रूफ फाइनेंशियल. करना पड़ेगा कहीं पे भी जाके, क्योंकि हाँ. आपके क्रेडेंशियल्स अभी लाइक आपको पता है, लेकिन करेक्ट. बाकी को नहीं पता ना कि आप कितने बड़े 30 मार्क हो. और ऐसे कोई अपना खतरनाक स्कॉलरशिप ट्रायल प्रोग्राम में नहीं है. चलो आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूशन में क्या चलता है, आकाश स्कॉलरशिप एग्जाम, हाँ. ये रेजोनेंस स्कॉलरशिप एग्जाम, कोटा स्कॉलरशिप एग्जाम. अब वो एजुकेशन में, अब फुटबॉल में तो नहीं हो सकता ना कि आप 2 से 3 दिन का एग्जाम रख के आप किसी भी प्लेयर की पोटेंशियल बता दोगे. करेक्ट. तो वो सारी चीज तो है. जैसे लास्ट ईयर जो प्लेयर थे मेरे साथ क्लब में, या मैंने ऑलमोस्ट इस साल सब लोग स्कॉलरशिप पे, क्योंकि आई डेवलप्ड देम. कि मैं बोला तुम एक साल इन्वेस्ट करो फाइनेंशियली, अपना टाइम इन्वेस्ट करो, डेडिकेट योरसेल्फ, देन आई पुश यू फॉर अ बेटर दिस थिंग. तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, दे पेड व्हाटएवर इट वाज. अभी सारे स्कॉलरशिप एंड ग्रोइंग. अब यहाँ से दे ओनली बी ऑन स्कॉलरशिप. नाउ दे हैव टू ओनली इंप्रूव. पर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. आप 16 साल पे आके बोल रहे हो मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, नहीं हो पाता. नहीं हो पाएगा. ट्रू. You have to invest into the system will invest in you. It's as simple as that. Yeah, that's So that's same for women's also. If clubs can do this, Yeah. it'll be a benefit. But I think women's also should understand and demand those things and also focus कि ये भी जरूरी है. मैंने फील कि हर एक एथलीट को ये समझना चाहिए जो आपने बोला है. हर एक एथलीट को, हर एक स्पोर्ट से जो आ रहा है कि आप यू इन्वेस्ट इन सिस्टम, देन सिस्टम इवेंचुअली इन्वेस्ट इन यू. Correct. दैट्स वो भी वो तीनों चीजें, टाइम, एफर्ट एंड मनी, ये तीनों आपको देना पड़ेगा. हम भी तो डाल रहे हैं. या ट्रू मैन. या So it's as simple as that. It's both ways. एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बिजनेस इन स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लिया, हमें प्लेयर थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लिया. थर्ड थिंग जो अभी मेरे को आप बताओ, लीग्स इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, कौन कौन सी लीग्स हैं जो एक एथलीट को अभी के टाइम पे जिनको फोकस करना चाहिए और उन लीग का पार्ट बनने का ट्राई करना चाहिए? कौन कौन सी लीग? So to be honest, जैसे we live in Karnataka, Bangalore. हाँ. I think Karnataka has the best league system in India. We have KSFA Youth League starting from under 7, 9, 10, 11, 13, 15, Wow. 17, 19, 21. Wow. आप देख रहे हो इतना लीग है, you can play throughout the year. Wow. Apart from this, we have private leagues. DPDL, it's double pass development league. नाम में डेवलपमेंट है. It's not about winning nothing. आप डेवलप कर रहे हो. ऑलमोस्ट 4 months की लीग होती है. होम अवे गेम्स होते हैं. 16-17 टीम होती है. आप वीकेंड में 2-2 मैच खेलते हो. तो अगेन इट्स लीग. उसके बाद होता है टैल, एमेचर लीग. इवन दे आर होस्टिंग अंडर 16, अंडर 19 लीग्स. तो बेसिकली आप पूरे साल खेल रहे हो, जो यूरोपियन में क्लब्स कर रहे हैं. You end up hitting 40-50 games a year, Wow. which is ideal. That's when you improve as a player. Wow. So I think Karnataka has the best league system here as of now, where you have from youth leagues, elite leagues, everything is going on. Even private leagues. Yeah. फिर golden baby leagues होते हैं. There's so many academies in Karnataka. C division clubs अगर आप देखो, almost 250 plus C division clubs. Wow.
Even though they're not working with the whole year, but they're active. Yeah. कुछ ना कुछ करते हैं. Yeah, every small ground में there are कुछ ना कुछ हो रहा कोई है. छोटे academy हर छोटे ground में with 10 kids Hmm. league में participate करते हैं. Hmm. So in a league you have 20 teams, 25 teams, 10, 15. As it keeps varying, but there are teams to play league, and parents are investing in it. Karnataka has so many grounds. HL है, South Net है. I might be putting a facility. Dravid Padukone है, Slok है. There's so many 11-a-side grounds. Neighbors, yeah. So it's all only improving. Yeah. Our Mr. N. Harris, sir, who's vice president of AIFF, president of KSFA. Satya sir is now acting general secretary of AIFF, who was secretary of KSFA. So they've moved up the ladder there. Okay. So I think Karnataka is putting a good footprint. And then elite level पे अगर आप AIFF पे देखो तो you have AIFF youth leagues, AIFF I leagues for kids, youth I league. उसमें you have under 13, 15, 17, अभी 19, 21 भी शायद start कर रहे हैं. Then under 21 में you have Reliance League, hosted by Reliance. So Karnataka से 2 teams and different states से 2 teams go and play in that league. So it's all top. उधर पे BFC, Srinidhi Deccan, Hyderabad FC, all the reserve team play under 21. अभी एक next gen tournament भी हुआ था जिसमें Everton, Watford, Wolves, Big I player think came up, yeah. these teams की reserve team had come under 21. उसमें BFC and all also had played. Okay. So there are tournaments happening and it's pretty happening in Karnataka. That's why so many players are migrating to Karnataka to play leagues. True. Super Division यहाँ का, I it can has see that. 19 teams. Wow. You almost play for 4 months. Wow. 18 league games. So Nitesh, so we are coming to an end to this podcast. It was very good. जाते जाते अपन एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड करेंगे आपके साथ. ठीक है. Be on your toes, be quick, और timer नहीं है as such, but yeah. So let's start with who is your favorite football team growing up? Man City. Most memorable goal or touchdown you have scored? I scored a goal from outside the box, chipped the keeper. Wow, that's amazing. Toughest opponent you have faced on the field? One of my friends when I was in childhood, Siddharth Joji, one of the best players. So कुत्ता बनाया था वो. Pre-game ritual or superstition you follow? I just my hand goes on the grass like this, just to feel the turf. Yeah. Or natural grass. Best piece of advice you have received from a coach? Success is a choice. Favorite football stadium to play in? I played in Old Trafford, so not my favorite though, but it was fun. So I would like to play in Etihad. Wow. If you could play alongside any football legend, who would it be? Ronaldo, obviously. Wow. Dream matchup your team against an historical team, who and why? You want me to make the team? Yeah. All the positions. ठीक है, I'll have Ronaldo playing up front, along with Neymar on one side and Hazard on the other side. I'll have Messi playing behind with Kevin De Bruyne. Wow. On my left, I'll have Gareth Bale. On my right side, I'll have Vinicius. I mean, you can rotate the positions. And defense, I have Sergio Ramos, Van Dijk. Right back, left back, I have Marcelo. Right back, I'll have Danny Alves. On the goal, I'll have IKFA. Wow, that's a great team. Like, There might be some positional mismatch, but then these players I'll make sure they play. okay. Preferred position on the field and why? I like to play centre mid now, क्योंकि आलसी हूँ, भागता नहीं हूँ अभी. Okay. But I'm very good at putting balls. Yeah, you like making the game. Yes, I like making the game. I have 2 guys in front of me who are like horses. I control them and then they just help me press and recover the ball. I just put the balls up. Nice. Most challenging aspect of your training routine? I think it is the dedication to wake up early. Okay. Can't wake up early. Yeah, that's a biggest challenge I face. Yeah. Favorite football memory from your childhood? My childhood. We played our regional finals in a rainy mud ground. So it was pretty wet, and then we lost because the ball stopped due to the bad ground condition. And the striker came and scored the goal. One skill you think every aspiring football player should focus on? Passing. That's tough. Toughest weather conditions you have played in? I played in London
in Manchester, Uh, uh, and it was so cold I couldn't breathe. So I was like gasping, and it was very yeah, tough for me. yeah, yeah. It is game-winning moment or comeback you will never forget. For the five-set tournament we played, we were 2-0 down, and I scored 5 goals, and I Wow. was a substitute because our player got ACL and he had to come out. I didn't start the game also. I just came and scored 5 goals, three with right, two with left, and we won. I feel like that happened with Mohammad Shami in this World Cup. Yeah. Yeah. But the only thing is I'm not divorced. Yeah. Oh, that's Yeah. good. Guys, Yeah. let's put this podcast to an end. It was very nice and lovely having you here, Nitesh. Thanks for joining us in this podcast. And we are looking forward to come up with more and more new athletes and give you guys good knowledge about the sport and the journey that you can pursue. Thank you. Thank you for having me.